Hey everyone, this is Hiram. Welcome back to my YouTube channel. So this is my very first vlog and I hope कि आपको ये vlog देख के मज़ा आए and I will try to show you everything as much as I can. So we are going to Baroda. Day after tomorrow is my birthday. I don't know if I'm excited about it or not. But yeah, I hope कि आप लोग ये vlog enjoy करो and if you do enjoy this vlog then make sure to like, share and subscribe to my YouTube channel. And let's go. Guys, packing तो already हो गई है and now I will dress well and then I will see you in the car. Bye bye. So we are going to a place where there is a pond and also so many birds and which are coming from foreign country to the place and I will show you कि वो जगह कैसी है, okay? So guys, we have reached the place where I want. It's a bird sanctuary. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down. So guys, we are back home and खाना भी खा लिया है और literally वो place इतनी ज़्यादा अच्छी थी. Let me tell you the name of that place. It's वडवान Lake and it's so amazing. बहुत ज़्यादा मजा आ गया. वहाँ पे 210 species of birds आते हैं, migrate करते हैं. अच्छा, शायद वो लोग दिसंबर में आते हैं और दिसंबर या फिर जनवरी के एंडिंग या फिर स्टार्टिंग में चले जाते हैं. अच्छा. अगर आप दिसंबर में देखने जाओगे तो आप लोगों को फॉरेन से माइग्रेट करके आते हैं जो बर्ड्स, वो भी देखने को मिलेंगे एंड दैट प्लेस वाज एक्चुअली वेरी गुड. यू मस्ट गो देयर. सो गुड मॉर्निंग गाइस. घर के बड़ी गंदी लग रही हैं आप. हम ऐसे हैं जो हैं वो हैं. सभी उपस्थित परिवारजनों ने मुझे बर्थडे विश कर दिया है. सो गाइज अभी तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के और मुझे विश करे हैप्पी बर्थडे. तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट विच यू आर गिविंग.
इतने ज़्यादा, मतलब जब भी मुझे मैं कभी भी स्टोरी डालती हूँ कि मैं के लिए शूट कर रही हूँ एंड ऑल दैट, तो वो सभी मुझे डीएम करके कहते हैं कि हीर तुझे ज़रूरत हो तो तू मुझे बुला ले, मैं तेरे वीडियो में शूट कर रहे, मैं तेरे हेल्प करूँगी एंड ऑल दैट। तो थैंक यू फॉर ऑल दैट सपोर्ट। मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं आप लोगों को बुलाऊंगी, ज़रूर बुलाऊंगी। एंड फ्रेंड्स डीएम करें, मैं अभी तो कुछ लोगों का फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ। इट्स रियली गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ऑल द विशेज़। ऑल्सो लोग मुझे यूट्यूब के लिए भी विश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू। हेलो गाइस, सो आज मेरा बर्थडे है और हम लोग अभी जा रहे हैं एक टेम्पल पे जो पूरा वुड का बना हुआ है एंड इट्स रियली वेरी गुड। सो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं देखने के लिए। सो या लेट्स गो। गाइस पिछली वाली जगह बंद थी तो हम लोग भी वेफल खाने आए हैं एंड या guys, we are going to Hiva Mall. See you there. सो गाइस कल बर्थडे पार्टी हो गई, एंजॉय भी कर लिया, केक भी काट लिया एंड बहुत मज़ा आ गया। व्लॉगिंग करने में भी कभी कभी मैं भूल जाती थी व्लॉग करना। एंड आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग एंड इफ यू डू देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।